Everyone, I hope you all are good. Today I will discuss editorial. The Hindu. Then I will every day I will discuss a one editorial. The Hindu, the Times of India. Okay, दोस्तों, तो then I will start it. Okay. Today the Hindu editorial. Take. Okay. Editorial. All the importance are couples. Okay, दोस्तों. It's some important question I will discuss with editorial. So I will start it. We need to follow the Fendergenius tapping point at 1 degree global due to a 1.1 degree global heating caused by the humidity of it. Every day he said 1.1 every each year will increase, temperature will be increase 1.1 degree. Okay, globally heating cause humidity of it. Humidity it will be increased. Okay, so called for developing and the transforming the technology to the support action and the climate change. Support action and the climate change have been lower worldwide. Okay, climate technology has become the survival for strategy for you special degree of techno determination that expansion. He said that temperature will humidity will increase. Okay, more the technology will be increased. For example, all types of the humidity say obviously it will be the जो भी चेंज होता है दोस्तों, तो क्या होता है जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो क्या होता है हम लोग लाइफ इज शॉर्ट वेरी शॉर्ट, सो इट विल बी यूज सम रॉन्ग थिंग सम जैसे आई विल यूज अ फोन. ओके, देन फोन यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ से भी टेक्नोलॉजी का वेव कहता है. बहुत सारा इंडस्ट्रीज अधिक जनरेट क्या आता है इससे क्या आता है अनेक प्रकार का वेव निकलता है. सो इट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट. So humidity will be increased. Existence I will take in environment cutting the fade. Okay, tree काटने से क्या होता है? It will be increase the जनसंख्या. Okay, population then exist in the strategy reverse. Climate change is the alarming. Climate change is the alarming technology. Climate change it will be say अलार्म देता है. अलार्म लगाना दैट मीन तो पहले इन्फॉर्म करना, पहले मतलब बता देना. ये मतलब जैसे कि एक बिल्डिंग दिया हुआ है, देखिए सब मान लीजिए सब बिल्डिंग इट विल बी क्रैक विल जनरेटेड. आई विल से कि 20 बिल्डिंग विल फॉल. में क्या होता है बिल्डिंग गिरने वाला, पहले हम बोल देते हैं अच्छा अरे यार घर गिरने वाले हैं, मतलब क्या होता है ये कहने का मतलब है द अलार्म. ओके, एग्जिस्टिंग द स्ट्रेटजी द क्लाइमेट चेंज इज अलार्मिंग टेक्नोलॉजी अलाउड टू द unpaired to deals with the change which required a socially overhaul and a zero emission of a strategy. मतलब it will be say कि कार्बन इसे जीरो करना है. ओके दोस्तों, कार्बन जीरो then it will be the humidity will be the controlled. Okay, next point I will discuss next point. Next point is the history is the sides. History is the one side and the technology, innovation, normal borlaws in the instance answered in the Green Revolution. Green Revolution which felt the billions of people increased the yield, but we may need to few million climate. Born is the scientist. He is the scientist. Taken the problem strategies. He will say कि green revolution बहुत सारा ट्री लगाने से क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे इन्वायरमेंट हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या मतलब कार्बन जीरो करना. तो बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो कार्बन जीरो. लेकिन प्रॉब्लम इज द स्ट्रेटजी यूज. क्या होता है प्रॉब्लम यहाँ होता है दोस्तों में हम लोग पास क्या है लैंड कम पड़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग को फैक्ट्री चाहिए सर्वाइव करने के लिए तो हम लोग कार चाहिए, पैसा चाहिए. ओके, तो इससे तो क्या होता है प्रॉब्लम वहाँ आता है. तो क्या होता है
कितना वृक्ष लगाए, पेड़ लग सब कुछ है ना भाई, मेरे को घर बनाना है, घर बनाना तो पेड़ को काटना ही पड़ेगा। ओके, तो ही विल से मोर क्लाइमेट चेंज है। ओके, बहुत सारा जगह है जो उपजाऊ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म, टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म देखिए, टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म COP26 ग्लासगो आल्सो फ्यूल, इसमें क्या होता है, COP26 ग्लासगो में हुआ था। ओके, ठीक है, 26 यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, 26 यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टू बी हेल्प फॉर 6 to 18 नवंबर 2009, सेम ये सर, एक कहाँ था ग्लासगो में हुआ था, एक कहाँ हुआ था ग्लासगो में। ओके, 26 सितंबर कहाँ होता है, ग्लासगो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूके में। ओके, ग्लासगो यूके में पड़ता है। COP26 इज द ग्लासगो फील्ड एंड द टेक्नोलॉजी प्रिजमाइजेशन है। वैसे तो दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट तो इफेक्ट पड़ेगा ही, इसीलिए was on the observation that every technological solution discussed at the COP26, COP26 में बहुत सारा डिस्कस किया गया कैसे हम अपना इन्वायरमेंट को संतुलन कराए रखे। देखिए आपको पहले गाड़ी घर में कितना गाड़ी था, एक गाड़ी था, गांव में कितना गाड़ी था, एक गाड़ी था, आज क्या है घर घर गाड़ी हो गया है। और इसलिए क्या कार्बन इमिशन जाता है, मोर कार्बन इमिशन हो रहा है। पहले आप साइकिल से जैसे चलते थे, ओके, पैदल से लोग पैदल जाता था, उसमें क्या है पोल्यूशन कम होता था, पोल्यूशन कम होता था, पेड़ पौधा ज्यादा था, जनसंख्या कम था, आदमी कम था। बॉडी जो ह्यूमिडिटी क्या आता है, बॉडी आदमी के शरीर में कितना बॉडी है। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है दोस्तों कि देखिए जनसंख्या पर सबसे फर्स्ट कॉज है द जनसंख्या। ओके, विद द पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो टेक्नोलॉजी तो रिसोर्स नेग्लेक्सिटी होता है, रिसोर्स क्या घट रहा है, हर चीज का रिसोर्स क्या घट रहा है। ओके, जनसंख्या बढ़ रहा है, खाने के लिए सस्टेनेबल करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहने के लिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देखिए और क्या हम लोग आज देखिए पहले लोग पंखा में रहते थे, तो ऐसे रहता था, गाँव घर के जनरेटर लिए। देखिए अब क्या है, आजकल AC चलता है, उससे बहुत सारा निकलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। ओके, द हाइड्रो पावर रिन्यूएबल फॉर द न्यूक्लियर कार्बन carbon capture storage CCS for the biomass, the total demand of those resources required by the plants discussed at the COP26 cannot be met in the 250 cannot be met by the 250 250 तक क्या करना है, क्लाइमेट चेंज करने में। तो सब लोग बहुत सारे देश से अपना हमने क्या कि हम लोग कार्बन जीरो कर देंगे। कार्बन निगेटिव देश कौन सा है बोलो, तो बोलेगा भूटान। भूटान में क्या जितना कार्बन निगेटिव कितना है, भूटान है कार्बन निगेटिव देश। गूगल से कार्बन निगेटिव कंट्री तो भूटान क्या पड़ता है इंडिया के पास में। ओके, वो जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा वो क्या होता है एब्जॉर्ब। कार्बन निगेटिव इस मतलब नहीं है, कार्बन मतलब क्या होता है, कार्बन निगेटिव मतलब कि कार्बन खत्म कर देना, कार्बन से जितना मैंने उत्सर्जित किया उतना मैं एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब यूज कर लिया। ओके, तो कार्बन निगेटिव मतलब वैसे है। ओके, देन आई विल डिस्कस देन we currently has 4 kilowatt per day was the electricity per person, but the COP26 plan required 32, range of 1648. We country have the 6 kg of the CCS per person per year, but the COP26 plans require 3600 range. इतना we eat 100 kg plant based। क्या इससे कि प्लांट बेस्ड हम लोग कितना खाता, 100 kg मटेरियल, 100 kg यूज कंज्यूम। ओके, प्लांट बेस्ड द फूड पर पर्सन, प्लांट बेस्ड पर पर्सन कितना 100 kg यूज कर लिया जाता है। ही विल से ईयर बट प्रोड्यूसिंग द इनफ बायो टू टुडे इज द लेवल्स रिक्वायर्ड 20 kg additional harvest। Okay, there is no possibility that your supply this will be the near the levels of the required by the plant discussed by the COP26। COP26 में क्या बोला, he will per person it will be used how much quantity through plant based quantity it will be used।
Okay, they say 20 kg per person, 100 kg per person. It will be required. It will be say the different way. Okay, so COP26, COP26 it will be arranged in the Glasgow, UK. Okay, second क्या आता है यूनाइटेड किंगडम. India in 2026 calendar at the Cartagena institution found that देखिए ही विल इसके द्वारा लिखा गया जेम्स सगमा इज द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड सिविल सप्लाई एंड द कंज्यूमर एंड द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इसके द्वारा इस ये दिस हिज आर्टिकल आर रिटन एज ओके then Iram Mirza is the advisor to the government of the impact and the programming and the management. Technology at the best can be assist, use not to lead us on the pathway to a sustainable, regenerative and the equitable words. Here the first is the ganda. Okay, those statements I don't want you to say those. Okay, then world need to nuclear plant. World का need to nuclear plant growth and the clean energy capacity every day between the 2000 and the 250 to avoid the catastrophic climate change in 2020. MIT Technology of Reserve reports that at the given rate, the world will take nearly 400 years to transform the energy system. देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा कोयला से एनर्जी जनरेट करते हैं कोयला से एनर्जी जनरेट मोर कार्बन एमिशन आर जनरेटेड मोर कार्बन एमिशन सो इन विद न्यूक्लियर प्लांट से क्या होता है कम कार्बन जनरेट होता है नहीं कि बड़ा होता है तो इट विल से कार्बन को कम करने से क्या लिखता है हम लोग क्या कंज्यूम हम लेस कार्बन कोयला को रिड्यूस करेंगे सो ओके तो टेक्नेटिक्स मैजिनेशन the conversation levels forest the economist and the subjected such as the conventional and the forest which are the best carbon removal requirement okay to the ideological fingers the the climate action required at the same amount of the investment in the conversation as we see new technology transfer इससे कि कार्बन इमिशन इन द लेस्ट सब्जेक्टेड टू यूज इज द मतलब क्या होता है कार्बन को हम क्या करना है लेस्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेना है ओके तो इसी टेक्नोलॉजी इज विल डेवलप ओके will there was the deforestation 90 डिफॉर्मेशन क्लाइमेट डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है लेस करना मतलब डीएक्सेलरेशन होता है जैसे एक्सेलरेशन होता है डीएक्सेलरेशन ही विल से ओके कमिटमेंट ऑफ द COP26 द नेचर ऑफ द प्लेस वाज वेगस कंट्री इज द गरीब कंट्री जो जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द सो पोर कॉन्टिनेंट ओके So there is the zero deforestation of the global वहाँ पर क्या होता है जंगलों में बहुत पानी को बहुत अब देखिएगा जहाँ पर पानी होगा वहीं पे पेड़ लगेगा ओके तो वहाँ पर क्या जहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो वहाँ पर पेड़ ही नहीं लगेगा भाई पानी की तो जरूरत है पेड़ के लिए तो ही विल से वाटर इज द मोर इम्पोर्टेंट जैसे इक्वेटोरियल के पास क्या होता है वाटर पानी से होता रहता है तो वहाँ पर क्या अमेजन वन है ओके तो हमेशा वहाँ पर क्या उस लैंड पर होता है अमेजन वन को लंग्स ऑफ अर्थ ही बोला जाता है So forming the world be in the much help the scientist the commentary in the nature had started that the naturally pressed tourist and the 40% more the effective than the plants ones okay
your climates your crisis climate crisis intertwined with the other complex issue. This means that we must insist of the multi-prongs, the interconnected climate solution. Forest sign here to the nothing except exemplify. This is the more than the intersection of the climate change crisis in the biodiversity crisis. Forest, which is the home in the 80% in the terrestrial wildlife at this in देखिए 80% कितने ये याद है 80% फॉर टेरिटोरियल वाइल्ड लाइफ मतलब जहाँ पे जानवरों का जो रहता है चाहे जू जैसे होता है तो वो तो नेचुरली रहता है आर दिस द इंटरसेक्शन फॉरेस्ट absorbed 7.6 billion metric tons COP22 year of new study has found that there is the biophysical aspect in the tendency to cool earth by and the additional 0.5 the conservation of the forest and along with the other Waste. Okay, solution can provide 37% of the emission. 37% emission. Emission मतलब carbons are generated. Okay, emission 30% emission of the radioaction need to be taken. Okay, radioaction need to be taken. 37% is to be taken. Climate change the Das Gupta review Neil Pen at a review land dependence. Okay. Review on the economics biodiversity respected reports that green infrastructure self much in the other 20 times in the cheaper that gray in the infrastructure breakdown. Okay, then another study is another. Okay, then another study estimated that the annual gross carbon emission from the tropic tree cover loss between the 25 to 27 इक्वा वैल्यू काटने का क्या होता है मतलब 2015 से 17 के बीच में बहुत सारे पेड़ काटने के इतना इस टन से 30 का मतलब कार्बन की संख्या क्या है बढ़ गया पेड़ के काटने से क्या होगा इट विल एब्जॉर्बिंग द कार्बन by the pair. Okay, so it will be say 4.8 billion tons it will be more because loss of the tree. Okay, loss of the forest. This is the affected of the environment. It is affected on the environment. This cause more emission. Such emission each year has itna million cars done in the lifetime in 2000. 85 million carbons 85 million cars to the lifetimes in the 2090s. Approximately 30% total next another total next anthropogenic greenhouse gas emission came from the energy supply sector 24 for the industry 24% का इंडस्ट्री से होता है 22% एग्रीकल्चर से इमिशन होता है 22% कहाँ से एग्रीकल्चर से 24% इमिशन कहाँ से होता है इंडस्ट्री से और फॉरेस्ट एंड द अदर लैंड 50% ट्रांसपोर्ट से और 6% ऑफ द बिल्डिंग से कार्बन जनरेट होता है ओके दोस्तों you will be remember that 24% इंडस्ट्री 22% एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट काटने से क्या होता है जंगल काटने से क्या होता है Waste and the 50% is the transport, 50% is the transport, 60% is the building. Building so that will be the cutting of the tree. It will okay. So conserving
natural cants, conserving natural cants, the IPCC land. IPCC land reports the estimates that land survey land large scope to sink. There is the growing body of the evidence that proportion of the wild removal could be the achieved by the conserving natural sink, improving the biodiversity protection. Biodiversity का protection it in the restoring the ecosystem. इकोसिस्टम को रिस्टोर करना हम लोग क्या होता है पुराना अथी करना पड़ेगा तो इकोसिस्टम को रिस्टोर को क्या होता है और फिर से मतलब होता है क्या इनमें से कार्बन करने के लिए क्या होगा कोई भी काम हम लोग क्या करते हैं गलत तो कर लेते फिर उसको करने के लिए सुधार करते हैं। ओके तो वही सिविल में ध्यान देना पड़ेगा कि मोर का वृक्ष लगाना पड़ेगा हम लोगों को। ओके वृक्ष काटना नहीं हो ट्री से बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम रिस्टोर करना पड़ेगा। Preserving earth of the cyclical process by the protecting of the territorial ecosystem and the natural sink and the transformative agriculture practices and the देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर का तो हम लोग बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए लेकिन हम लोग क्या होता है मोर क्वांटिटी में अर्निंग ऑफ मोर क्वांटिटी ग्रोइंग करने के लिए हम लोग क्या होता है फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर यूज करने से क्या हम लोग को सॉइल क्या होता है सॉइल पोल्यूटेड होता है सॉइल पोल्यूटेड उससे बहुत सारा केमिकल यूज करने से ये भी क्या है कि हम लोग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं क्वालिटी कार्बन जनरेटेड जैसे CH4 के ओके तो ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन अंडर द लीडरशिप द indigenous people, indigenous local community, it is for the more equitable and the cost-effective work. Taking the climate crisis, that is the beginning done now. I hope, okay. Sorry. We need to realize. I hope कि आपको realize. We need to realize that the climate This is just a simple symptom. Climate is just a symptom. It will be the जैसे कि बीमारी आता है दोस्तों बोलता है ना कि बुखार आ गया मतलब देह दर्द है मतलब क्या एक सिम्टम है मतलब बुखार आने का चांसेस है मतलब क्या होता है जैसे कि देह दर्द है सर दर्द है तब क्या बोलते हैं बुखार आएगा मतलब क्या होता है सिम्टम आ रहा है मतलब क्या आपको पहले से पता है अलार्म दे देता है ही विल से इट विल बी स्टार्टेड द पोल्यूशन आगे कुछ जनरेशन में क्या होगा बहुत सारा क्लाइमेट में बहुत सारे इफेक्ट मतलब रैंडमली क्लाइमेट चेंज से क्या होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है बहुत सारा बीमारी जनरेट हो जाता है ऐसे हो गया आप क्या होता है ऐसे क्या होता है क्लाइमेट चेंज से क्या होता है सॉरी on the humanity symptom the real the problem with the sad the human consumption and the active have the exceed the regenerative capacity of the planets. Technology at best can be assist to use not lead use the pathway to the sustainable regenerative and the economic one. I hope do you understand that topics and the okay so climate is the most parts of the life of those to I hope कि एक वृक्ष आप कम से कम साल में एक वृक्ष तो लगाइए दोस्तों कम से कम एटलीस्ट एक वृक्ष हम लोगों को लगाना चाहिए कम से एटलीस्ट ओके ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत अच्छा है लेकिन एटलीस्ट हम लोग को एक वृक्ष तो लगाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर करिएगा वीडियो